Okay. Okay. So I think this diagram will make a lot of things clear. So when we talk about like a source vector space जिसके ऊपर एक function लग रहा है and it's being transformed to some elements into another vector space. So this is the entire scenario that we are talking about अभी तक, ठीक है? तो कर्नल ऑफ टी इज, और यहाँ पे एक सेट, बेसिकली दिस इज अ सेट, इसमें से एक छोटा सा गोला बनाया है, सो बेसिकली इंडिकेटिंग ऑल ऑफ दिस इज बीइंग मैप टू जीरो। तो जितने भी जीरो पे मैप हो रहे हैं, ठीक है, इन अनदर वेक्टर स्पेस। सो रिमेंबर दिस, यहाँ पे टी आएगा, बीच में टी लिखा रहेगा, सो दैट बेसिकली इंप्लाइज कि यू के ऊपर टी लग रहा है और फिर वी मिल रहा है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड कर्नल। रेंज का मतलब वो होता है कि इसमें से जितने भी एलिमेंट्स ले लो, उनसे जो भी चीज लाइक वट एवर दे आर बीइंग मैप टू, जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस यहाँ पे स्पैन करें, ठीक है। हो सकता है ये बीइंग मैप टू वेरी वेरी स्मॉल, तो ये बेसिकली जितने पे भी मैप हो रहा है उसको रेंज बोलेंगे, ठीक है। सेम क्लासिक डेफिनेशन ऑफ डोमेन इन अ रेंज, ठीक है। नाउ yeah, I think that's basically the definition of range that we were talking about here. And again they are saying that range is always subspace of V, and they are also saying that the kernel is also again a subspace of U. And they're saying T is surjection if range of T is equal to V. Okay, so subjectivity we saw, right? Every element has to map to something, but we see कि ये जो elements हैं, ये इनका अगर देखोगे तो यहाँ पे कोई मिलेगा नहीं, right? So there cannot be surjection as long as this is basically a limited set in that entire vector space, right? तो अगर ये पूरा का पूरा ये range होगा, like पूरा का पूरा vector space span कर रहा है, then we can call it surjective, right? तो ये I think वही बात कर रहा है. And I think pre-image is basically this only, like you pick up any random element here, and वो किस चीज से आया था, that will be called pre-image of that element, okay. So just to like reiterate things कि when we are talking about taking a bunch of vectors in one space and mapping it to a bunch of vectors in another space, and we are trying to come up with a framework to analyze this particular thing, okay. And essentially in those things we are only studying, limiting ourselves to like linear transformations. So when I say linear transformations, all of those transformations that have two specific properties, matlab ki if I pick any two vectors here, then the transform like adding transformation on those two vectors would be equal to applying transformation on addition of those two vectors, and then again lambda वाला जो है एक second criteria है, ठीक है. So I think, by the way, any confusion on this diagram so far? I think this should give you a lot of idea of what we are talking about. Is this clear, by the way, guys? Can you say yes or if it is clear to you? Okay. Yeah, I think it's not that difficult anyway, so it should be pretty much clear. मेरे को एक डाउट है वो डायग्राम में. हम्म सपोज कर्नल में दो एलिमेंट है, हम्म तो दोनों को ऐड करके उसका मतलब मैपिंग करेंगे तो वो जीरो पे ही जाना चाहिए ना. हाँ, बट अगर पहले मतलब पहले ऐड करेंगे तो वो कर्नल के बाहर चले गया तो क्या होगा? कर्नल के बाहर नहीं जाएगा ना, सब स्पेस है. आई मीन यू या दैट्स अ गुड क्वेश्चन. So what you're essentially what he's asking is कि यहाँ पे दो कोई random elements लिए हैं, तो can they go out of हाँ. kernel, ठीक है. Essentially, I mean, by definition that will not happen, ठीक है. I mean, that cannot happen क्योंकि अगर वो बाहर जाएगा तो essentially वो भी कर्नल का ही पार्ट रहेगा, क्योंकि अगर as long as it's a linear transformation, right, and if this so the thing is कि you are saying कि वो बाहर जा सकता है, right, but हम कह रहे हैं कि by definition वो बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि अगर वो ओके, linear सो यू आर सेइंग transformation है. कि हाँ, what I'm saying हाँ. is कि ये अच्छा अगर अच्छा. ये satisfied है तो ये काम हो नहीं सकता है ना, क्योंकि बिकॉज आई नो कर्नल है, तो ये जो चीज़ है ये भी मैप टू जीरो ही होगी, राइट. अगर कर्नल ओके है तो ये भी जीरो पे ही मैप होगी, राइट. सो एंड ओके ओके. हाँ एंड बिकॉज मेरे को पता है कि अगर वो दोनों हम कर्नल से उठाए तो ये भी जीरो, ये भी जीरो है. तो अगर ये आरएचएस जीरो है, इसका मतलब ये वाला भी चीज जो है ये भी तो जीरो ही है ना. तो इसका मतलब कि U1 प्लस अच्छा. U2 हाँ भी तो कर्नल में ही होगा, राइट. हाँ हाँ. ओके. तो वो हाँ, वाली चीज है, तो मेरे को ना मतलब वो एडिंग ऑपरेशन से कंफ्यूज हो गया. ठीक है. हाँ हाँ. द थिंग इज कि वो हम रेस्ट्रिक्शन डेफिनेशन पे ही लगा दें, तो इट कैन नॉट गो. हम अगर वो जाएगा भी तो कर्नल का ही पार्ट रहेगा, ठीक है. ठीक है, दैट्स अ गुड क्वेश्चन. एनीथिंग एल्स गाइस? ठीक है.
We have 4 minutes left. Let me just read what is written here. So let T on the basis of T, let on the basis of T forms the basis of V in particular dimension of this convention. Okay, I think what they're talking about is कि जैसे ये वेक्टर स्पेस लिया है, लेट्स सपोज इसका बेसिस कुछ है, वो जो बोल रहे हैं U से UN के बीच में है, ठीक है, एंड लेट्स सपोज इसका बेसिस W1 से W1 के बीच में है, मतलब उसको W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देन व्हाट दे आर सेइंग इज कि इसका बेसिस प्लस T इनवर्स ऑफ दिस will be subset of V forms the basis of V. अच्छा अच्छा wait. So this is basically about talking about kernel of T. Okay, so what they're saying essentially is कि ये जो kernel है, right, इसका भी एक basis होगा, okay, and then ये जो चीज़ है इसका भी एक basis होगा, तो ये कह रहे हैं कि इस ये जो basis है जो इस kernel के हैं plus all of the reverse elements of this like basis of this thing would actually give you basis of this entire space. मतलब कि अच्छा ठीक है, सो इट इज एंटायर स्पेस बेसिकली व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज जैसे कर्नल है तो ठीक है, कर्नल का बेसिस अगर हमको पता है तो एटलीस्ट आई विल बी एबल टू रिप्रोड्यूस ऑल ऑफ द वेक्टर्स इन कर्नल्स, राइट? तो अगर हमको बंच ऑफ रिमेनिंग थिंग्स को भी बनाना है तो व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज कि इसका जो भी बेसिस है उसके सारे उन सारे बेसिस को मैप कर दो इस पे, तो जो भी वो चीजें मिल रही है उन सारे के बेसिस पे तुम कोई भी और मतलब पूरा का पूरा स्पेस बना सकते हो, ठीक है? दिस इज द स्टेटमेंट दैट दे आर मेकिंग, एंड इन पर्टिकुलर दे आर सेइंग इज कि dimension of V is equal to dimension of kernel of T plus dimension of range of T. So there's basically, okay, when I say, okay, I forgot to tell you the dimension, right? The dimension essentially was basically the number of elements in the basis, ठीक है? So dimension of a space ऐसे define करते हैं कि कितना उसमें basis में है, जैसे अगर हम लोग we looked at 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1, right? So basically तीन elements हैं, not 0 0 1, basically three vectors are there, okay? So these three vectors are were the basis, and three was the number that will be like the three basically becomes the dimension of the space, okay? Now what they're saying, trying to say is that the dimension of the entire space will be equal to dimension of the kernel, like kernel space plus dimension of the like pre-image, basically the range ka here, okay? Now um this is basically I think this is something which is not intuitive on the by the diagram, so we'll have to see some of the proofs from here. But is this a statement clear that what it's trying to say? But essentially we are trying to find out the basis of this space using the basis of kernel and using the basis of the range on any other space. Okay, is the statement clear first of all to everyone? मतलब बेसिस ऑफ कर्नल की क्या जरूरत है, खाली बेसिस ऑफ रेंज से मैप हो जाएगा ना? नहीं तो ये बताओ, ये जो रेंज है इसका बेसिस है तो वो तो इतने को ही रिप्रोड्यूस कर सकता है ना, और प्लस एनीवे हाँ बेसिस ऑफ सम अदर स्पेस से तुम किसी दूसरे स्पेस को नहीं बना सकते हो ना। यहाँ पे ये कह रहा है कि ये मतलब इसका जो बेसिस है उसका तुम रिवर्स मैपिंग निकालो इसमें, मतलब ये जो रेंज है ना, मतलब जैसे कि ये यहाँ पे कोई मान लो 1 2 3 था, वो 4 5 6 पे इधर मैप हुआ हुआ, ठीक है? सो व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज कि इस स्पेस में जितने भी वेक्टर्स हैं उनका बेसिस पता कर लो और वो बेसिस को वापस इसमें मैप करो, ठीक है? वो बेसिस भी तो कहीं ना कहीं से आया ही होगा, राइट? तो वो बेसिस को हाँ, वापस इसमें मैप करो और फिर वो जो मैप वैल्यूज आई हैं प्लस कर्नल के बेसिस टोटल बेसिस बनाते हैं, ये कह रहे हैं। अच्छा, क्योंकि जीरो से पता नहीं चल रहा कि क्या है, इसलिए हम बाकी सबका पहले ले रहे हैं और फिर जीरो का जो बचा वो ऐड कर रहे नहीं ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट नहीं है, मतलब आई थिंक ये मेरे को भी अभी नहीं दिख रहा है कि कर्नल का बेसिस अगर हमको पता है और हमको इनका बेसिस पता है उसका रिवर्स कर दें हैं। आई तो हो थिंक सकता है। ये बोल रहे हो ना आपकी, वो जो रेंज का जो बेसिस है वो हाँ कर्नल के, उससे कर्नल का बाहर का पता चल जाएगा, तो हाँ खाली हाँ कर्नल के अंदर का बेसिस बचा। हाँ, मतलब हम ये मतलब ये स्टेटमेंट है इनका कि कर्नल के बाहर का जो है वो शायद इनसे हो जा रहा है और कर्नल के अंदर को तो कर्नल के बेसिस से मिल ही जा रहा है, राइट? सो हाँ, सम टोटल क्योंकि वो जीरो से नहीं मिल रहा है इसलिए कर्नल का ऐड करना पड़ेगा। हाँ हाँ, स्टेटमेंट यही ओके। है एक्चुअली में, ठीक है? यही है स्टेटमेंट। तो But ओके, yeah, doesn't seem straightforward, right? मतलब
नहीं हाँ जीरो इतना का स्ट्रेट क्यों फॉरवर्ड, नहीं मिल रहा है द क्वेश्चन, मे बी हाँ मतलब इतना स्ट्रेट देखना फॉरवर्ड पड़ेगा। नहीं है कि भाई बेसिकली प्री इमेजेस मतलब इस रेंज के को रिवर्स करके अगर देखें, मतलब इसके इन पर्टिकुलर इसके बेसिस की बात करें और उसको रिवर्स करें तो इसका बेसिस प्लस उसका बेसिस मतलब कर्नल का बेसिस को ऐड करने पे मिल जा रहा है। तो आई थिंक ये प्रूफ देखना पड़ेगा। आई थिंक देख लेते हैं कितना समय बचा है, 10 बज गया। आह, ये क्या कर रहा है कर्नल यूआई। Okay, okay. I think just trying to explain what the statement was. So it's basically saying कि let's suppose if W2 WN are bases here, and these are being mapped to some random vectors here, and this plus this like the basis of the kernel plus the inverse of the basis of this space will give you the basis of the entire space. Okay, तो ये diagram वही बता रहा है। ठीक है। So I think ये break करके ही देख रहे हैं लोग। So I think what, let's see the proof. Okay, I think I'll just ask some random person to just work. Can anyone just read this out? कि ये basically क्या कह रहे हैं? Who are the people? There were 7 people. One of them left. Okay. Dhruv, can you take a मतलब यहाँ पे ये क्या चल रहा है? Basically, can you read it out and try to explain? ये क्या लिखा है? Dhruv, are you there? Okay. Krishna, can you try to explain what has been written here? I'm bad with these notations. हाँ तो notation, Yeah, like, that's why I'm trying to like have like help you. yeah, समझा। हाँ, Okay, so let V belong. ये Yeah, let basically V for from, okay, from that. इसका For मतलब होता है, every, हाँ फॉर एनी इसका मतलब होता है फॉर for एनी। any, okay. छोटा ये इसका मतलब होता है फॉर इट बेसिकली बिलोंग्स टू, मतलब कि मतलब इस पूरे Yeah. सेट में से कोई एक एलिमेंट है। इसका मतलब होता है कि फॉर एनी दिस। Mhm. For, yeah, so for any of the lambdas 1 to m, transformation on V, एनी रैंडम again, वेक्टर वी like, फ्रॉम द यूनिवर्सल स्पेस। okay, yeah, yeah, is a combination. Yeah, I mean basically transformation maps Okay, I'm just to confused. range, right? So I mean Mhm. one way to write anything here is basically TV. Other ways obviously right to write those things in terms of basis, right? तो वही statement यहाँ पे लिखा है। Okay. ठीक है। So why Mhm. everyone like is clear, right? Why LHS and RHS are equal, right? ठीक है। Go ahead, yeah, go ahead, Krish. Okay. मतलब lambda का मेरे को वो नहीं समझ में importance. What is lambda? बेसिस का मतलब क्या होता है ये बताओ? बेसिस ऑफ So स्पेस। base is any, I mean, yes, the unique collection, the minimum unique collection of हाँ elements that मतलब can create the whole thing. हाँ that can create the whole thing, right? So forget about left LHS here. What does this Mhm. represent? ये जो lambda 1 plus ये, this represent any random vector, right? In the range, Yeah. Yeah. right? And if you look at TV, so what does TV represent? मतलब basically यहाँ Same thing. Same thing. सेम थिंग, राइट? आई मीन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि देखो, अगर तुमको इस पूरे स्पेस का बेसिस पता है तो उस सबसे उसमें से कोई भी सबसेट उठा लो, उसका भी उस वो भी तो उससे बन जाएगा, राइट? आई मीन यहाँ पे स्पेसिफिकली ये लोग हाँ. रेंज के बेसिस की बात किए हैं, तो रेंज तो पूरा इससे मतलब W से रिकवर हो जाएगा ना। तो अभी हम लोग Mhm. रेंज, और ये हमको पता है बाय डेफिनेशन टीवी तो हर वैल्यू रेंज में ही दे रहा है ना, तो कोई भी रैंडम हाँ. वेक्टर जो इधर से इधर आएगा उसको तुम इस कॉम्बिनेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हो। रिमेंबर W इज फ्रॉम दिस स्पेस, V इज फ्रॉम दिस स्पेस, ओके? एंड वी व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज कि एनी जब V ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं V को T से और वो जा रहा है इस स्पेस में, और इस स्पेस का बेसिस चूंकि ये है तो उस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके? Mhm. Okay. Okay. Hmm. Then, yeah, मतलब ये linear transformation वाला rule apply हाँ रूल कर रहे अप्लाई, हैं mostly. या I can't read what is there inside. आई थिंक व्हाट दे वो हैव, या इट्स इवन डिफिकल्ट फॉर मी टू handwriting रीड। बहुत ही ये एकदम शायद लिखे simple. हैं, ये आई थिंक बेसिस को लिखे हैं, V के बेसिस को लिखे हैं। Okay. वेट, ओके दे हैव रिटन दिस एज अ प्री इमेज। यहाँ पे ऐसे एक्चुअली ये पे मैपिंग कर दिया WI को, WI किसी VI से आ रहा होगा, राइट? इससे सिमिलरली WN भी किसी VN से आ रहा होगा, तो वही वो लिख दिए। सो WN बेसिकली इज आल्सो अगेन T into some हाँ. random Okay. V1, ऐसा जो हाँ. लिखे हैं यहाँ पे।
Okay, या फिर एक और लीनियर कॉम्बिनेशन वाला हाँ. मतलब फर्स्ट रूल. Yeah, so essentially I मतलब think what that, combining it. हाँ, so it's basically I think इतना भी जाने की जरूरत नहीं, यहाँ से directly दिख रहा है कि it's basically lambda one. I mean, if they are saying okay, this is the basis, then basically yeah, t into this v vector can be represented as this, right? Any random vector can be represented as this, and this essentially means this. Now the next step is to okay, maybe Ritesh, can you take a guess like what on the next steps? तो फिर after subtracting the blue range जो ऊपर वाले में underlying है, so if we subtract that from TV, then only 0 remains, right? So so after that, so from V we subtract that This thing pre-image, which is yes, which is mapped to that blue part. So I don't know after this. ये यहाँ पे क्या लिखा है? For any u to un such that this is equal to for any u say un such that v minus this is equal to this. What is this? u11 plus 2. It's not very clear what they have written. That might be something related to kernel. अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ इसको. Sorry? Something नहीं, related to ये जो क्या लिखा है, ये u1 plus un लिखा है, राइट? आई मीन यहाँ से तो ये तो पता चल रहा है कि ये जो 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 चीज है, ओके, या यू आर राइट, आई थिंक, या यू गेस. So basically this is equal to 0, right? And अगर ये equal to 0 तो I think this has to be a kernel, right? Yeah, that's सही, good job भाई. तो ये basically kernel ही होगा, right? Can everyone see ये क्यों kernel होगा? This has to be a kernel, right? मतलब जो कोई भी चीज अगर 0 पे मैप हो रही है कोई वेक्टर, तो वो हम लोग बाय डेफिनेशन उसको कर्नल ही बोलते हैं ना. और यहाँ पे इस पे एक्सप्लिसिटली हम लोग बोले हैं कि कर्नल का ये बेसिस है. तो व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज कि इस पूरे चीज को तुम अगेन अगर कर्नल का बेसिस पता है तो कर्नल के बेसिस में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, राइट? अगेन अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द बेसिस ऑफ कर्नल, राइट? सो ये वो चीज लिखा है, आई थिंक. ठीक है, ये वही चीज लिखा है, नॉट आई थिंक, इट्स बेसिकली द सेम थिंग. सो व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज कि यहाँ तक जो भी चीज मिली है वो विल बी इक्वल टू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द बेसिस ऑफ द कर्नल्स, राइट? एंड देन इस चीज को फिर ये लोग इधर लेते आए हैं एंड वी को इधर कर दिए हैं. एंड देन दे आर सेइंग कि वी को फिर ऐसे लिख सकते हैं. और ये चीज वही चीज है, देखो, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द प्री लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थिंग्स प्लस लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थिंग्स. ओके, So it is as good as saying 2 equal to 2 plus 0. मतलब, right? Because that u part is 0. कौन सा u part? Adding 0 to something is 0. It doesn't change something. Is that? I think नहीं. So that's what they're trying to do. इसको इधर लेते आया, राइट? वी को इधर छोड़ दिया, इसको इधर लेते आया है. ये अच्छा, एक फर्स्ट ऑफ ऑल ये पार्ट क्लियर है कि नहीं? ये यहाँ पे ये कैसे आ गया अचानक से? Yeah, I think it's clear to Krishna because he only came up with this. But Dhruv, Ritesh, Sat, I think. मेरे को पूछना था कि वो W और E दोनों बेसिस ही है ना, मतलब पॉइंट्स नहीं है ना रैंडम? ये ना, हाँ, ये W जो और E, हाँ, ये जो W है ये रेंज think, का बेसिस है, ठीक है? और ये जो UI है और ये कर्नल का E, बेसिस है. और ये जो ब्लू डॉट यहाँ पे लगाए हैं Z, इसको वापस मैप किए हैं इसमें. हाँ, ये Z लिखे या T लिखे, आई डोंट नो क्या लिखा हाँ, है. तो Z उसका बेसिस है, मतलब कर्नल नहीं, के अलावा बेसिस जो नहीं बचा है. उसका. नहीं, ये अभी प्रूव कर रहे हैं. अभी यहाँ पे जस्ट थिंक ऑफ इट एज द पॉइंट व्हिच बेसिकली इज द इनवर्स ऑफ द बेसिस ऑफ द रेंज, दैट्स इट. ठीक है, ओके. तो अभी वो प्रूव नहीं किए हैं, ठीक है? और एनीवे बेसिस होने के लिए बाकी चीजों का हम देखो, बेसिस हमेशा वेक्टर स्पेस का डिफाइन होता है. कर्नल एक अच्छा, वेक्टर okay, स्पेस हाँ. है, बट जरूरी नहीं है कि बचा हुआ चीज एक वेक्टर स्पेस हो ना. आई मीन इट्स क्लियर, लाइक अगर हम कोई एक यहाँ पे वेक्टर उठा ले, यहाँ पे वेक्टर उठा लें, उन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन यहाँ पे आएगा. तो ये बेसिकली द बचा हुआ चीज इज नॉट अ वेक्टर स्पेस. टेक्निकली सेइंग कि ये चीज बची हुई चीज का बेसिस है इज रॉन्ग. ओके,
फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रूव कि जो कर्नल निकालने के बाद बचा वो वेक्टर स्पेस है कि नहीं है। ओके ओके हाँ ओके ठीक है। सो आई थिंक इस तरह से अंडरस्टैंड करो कि शायद बचे हुए चीजों का जो रिप्रेजेंटेशन से हो जाए देन दैट इज फाइन, बट when we'll not call it as a basis. Okay, so that understanding is not correct. Okay, बट एसेंशली यहाँ पे अभी तक ये जो बेसिकली जो RHS आया है वो इसी से आया है कि यहाँ तक जो हम लोग प्रूव कर दिए कि हाँ ठीक है t into something is equal to 0 and we know t into something is equal to 0 का मतलब भाई that something has to be kernel and we already know कि kernel का basis ये है, then essentially we can write it like this. Okay, so basis का मतलब कि ठीक है जहाँ भी basis term हुआ आप चमक गई कि like you just write a linear combination. Okay, now this comes here, then we started off with a random vector, right? We let v belong to v. तो यहाँ से ये चीज मिल रही है कि ठीक है v is basically this, बट अभी ओके अब इससे लीनियर इंडिपेंडेंट इससे वो प्रूव हुआ क्या कि ये सारा चीज बेसिस है। अभी एक और चीज क्या प्रूव करनी है जल्दी, लाइक कैन एनीवन से टेल मी। आई थिंक एक और चीज ये प्रूव करनी है ना कि अगर देखो लीनियर ये सब सारे लीनियर इंडिपेंडेंट है ना, एंड सारे अगर लीनियर इंडिपेंडेंट है तो वो ये सारी चीज तभी हो सकते हैं जब ये सारा के कोएफिशिएंट जीरो होंगे, राइट? सो लाइक आई सेड लीनियर इंडिपेंडेंस के दो कंडीशन होते हैं, राइट? सॉरी बेसिस के दो कंडीशन होते हैं, लीनियर इंडिपेंडेंस एंड स्पैन। तो आई थिंक स्पैन वाला चीज तो यहाँ से दिख रहा है क्योंकि ये जनरल अपना वेक्टर था और ये भी और ये बेसिकली कह रहा है कि ठीक है कोई जनरल वेक्टर कैन बी प्रेजेंटेड लाइक दिस, but the second thing that remains is like we have to prove the linear independence of these things. Okay, this is clear. So whenever I say basis हमेशा दो चीज ध्यान रखनी है, मतलब linear independence and the span, not just मतलब just ये बस दिख गया कि हाँ उससे सारा वेक्टर बन जाएगा उसको बेसिस बोल देंगे, नहीं वो सारी चीज को तुमको जो है linear independent भी प्रूव करना है। Okay, so I think seconds, yeah I think see the second step is basically essentially proving that thing. So maybe okay, so okay let's just quickly look at this proof. Can Krishna again, can you take just walk us through maybe a couple of steps and then maybe sat. Okay, So far it's clear why we are doing this, right? Everything is clear so far. Okay, yeah, so they are trying to assume it's zero and then trying to prove it's only possible when each of those are zero. Yeah, maybe okay. maybe something like that. That's a good observation. ठीक है, अच्छा so maybe Ritesh can you like look into detail मतलब क्या उसके assumption के बाद कैसे कर रहे हैं proof? Guys, the thing is that these notes are also new to me. ठीक है, this also I'm reading this for the first time. ठीक है, so I mean I'm all of us on the same stand. Yeah. तो वो ब्लू अंडरलाइंड है वो कर्नल है ना? जो ब्लू अंडरलाइंड है हाँ Okay. कर्नल है, हाँ कर्नल है, हाँ राइट। तो assume that kernel plus remaining points equal to 0, but transform तो किया नहीं तो equal to 0 का क्या मतलब? आई थिंक अभी एक assumption लेके चल रहे हैं आगे कि assume कर रहे हैं Okay, zero, assume किया, okay. शायद कुछ contradiction कराएंगे, हाँ. ऐसा कुछ होगा। So if बाकी के points is equal to transformed and ये t का क्या मतलब? अच्छा t है ना वो? हाँ t on ये जो point है ये basically original space से आया है। Okay, तो if this is equal to transformed version of those remaining points, then the remaining points plus the transformed kernel should be equal to 0. Like ये जो चीज को कैसे जीरो कर दिया है? because this is transformed of kernel. ट्रांसफॉर्म्ड ऑफ कर्नल, यस हाँ ठीक है हाँ तो खाली लेफ्ट साइड का बचा एंड लेफ्ट साइड का बाई स्टार, ये स्टार क्या चीज है? बाई दिस, या ओके या आई मीन द थिंग इज कि यहाँ पे ओके लेट मी जस्ट टेक अ शॉट एट दिस।
यहाँ पे assume करें इसको 0, तो ये हर वाला चीज को इधर रख दिए, इसको इधर रख दिए। नो नो वेट, दिस इज नॉट बीन ब्रॉट इनटू द पिक्चर। ये हरे वाली चीज को यहाँ पे लिखे हैं, फिर इसको इक्वल टू लिखे हैं, ये W है राइट, तो W इज एसेंशियली T ऑफ दिस दीस पॉइंट्स ओनली राइट, T ऑफ दीस पॉइंट्स राइट। तो ये वो चीज लिखे हैं, तो ये इसी चीज को लिखे हैं, like they took this, then W has been written in this form, and then plus, and then yeah, and then they add this part finally here, right? And then they are saying, okay, this part is essentially equal to 0, which we already know, which I don't know why they wrote again. Then यहाँ से T को बाहर निकाल लिए हैं, then ये lambda को ये रखे हैं। I think वो transformed version इसलिए लिखा है to ensure that हाँ kernel is हाँ excluded from the. यस आई थिंक नहीं, ट्रांसफॉर्म इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये जो कर्नल के ऊपर भी ये सारा टी को यहाँ पे लेके आ गया कॉमन, तो ये जो बंदर बचा वो यही सारी चीज बची, मतलब बेसिकली हाँ, इनका लीनियर kernel कॉम्बिनेशन exclude हो प्लस गया. इनका लीनियर, नहीं कर्नल भी है ना यहाँ पे, ये रहा। सो यहाँ पे जो अंदर की चीज बची वो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बची और इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बची, राइट। देखो यहाँ पे क्या है, ये जो चीज है ये ये जो चीज है इसको ऐसे लिख दिया राइट, ये कर्नल। हाँ, तो यहाँ से टी कॉमन आ गया, एंड देन दिस इज दिस दे आर सेइंग दिस रेड पार्ट इज 0 because we started off with this assumption, right? I mean, okay, this step is nowhere, ये यहाँ जो ये यहाँ से लिखा है इस लाइन से, इस लाइन के ऊपर ये जो assumption लिखा है, ये लाइन वहां से नहीं आया, ये लाइन बस बेसिकली रैंडमली स्टार्ट किए हैं इस चीज से, इससे ये बिना इसमें फिर ये ऐड कर दिया, बिकॉज ये वी कैन सेफली ऐड इट बिकॉज दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 0। देन यहाँ पे इसको जो है यहाँ से टी बाहर निकाल करके इसको 0 कर दिया, फिर यहाँ पे इस assumption को यूज किया, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 0, and then they are saying if this is equal to 0, then this has to be 0, this has to be 0, and this implies all of this is 0. Okay, by star, then वो star मतलब by assumption है शायद. by assumption है this is equal to 0, and they are saying कि ये जो पार्ट है अलग से 0 होगा, ये पार्ट अलग से 0 होगा, and then they are saying this is basis, now this part अलग से 0 होगा, why? Because why? And I this thing is essentially combination of all the kernels, and this entire thing is 0, then this should be 0, but इसका bifurcation यहाँ पे 0 कैसे किए? Okay guys, I'll just maybe look into this into next lecture. अभी ये मेरे को भी clear नहीं हो रहा है. Maybe in the meantime you can also look into it. I think it's a good exercise, and then we can have a discussion. It's pretty much, I think what they're doing here is like pretty much going round and round into the same thing, and somehow यहाँ से यहाँ कैसे आ रही है directly, it's not very visible to me. But okay, anyway, let's just conclude. I think let's just take this up in the next lecture. Okay, for the next lecture, I think we'll try to wrap up like a lot of things, because if we go at this pace, तो बहुत महीने लग जाएंगे, इतना लगाना नहीं है, ठीक है। So थोड़ा proof and all, I think we'll just mostly try to skip, as long as it's not very intuitive, okay? Because proofs are taking a lot of time. So okay, so far, any questions like apart from this, obviously, anything which was not clear, anything else? मैं काफी चीजें काफी क्लियर थी। Sorry? आज की चीजें काफी क्लियर थी अपार्ट फ्रॉम दिस Okay. this proof. I think it's Yeah. better if just you guys have a look, okay? And Yeah, okay. sure. Any so other like Dhruv, Krishna, Ritesh, Sat, any confusion in anything covered so far? No, very fair. Acha. And like, is it pretty much clear like why we are trying to like do all of this stuff in a certain way? Like apart from the definitions, but you do have some certain intuitions like why into all of these things, right?
because that intuition is something which is more important in trying to understand the definitions and what is happening. So make sure like that intuition is pretty much clear, like if you are trying to study this thing in this manner. Okay. ठीक है. Okay. So apart from that, guys, if you have any feedback like as to teaching style or anything else like that I should change, then feel free to like ping or just post it in the channel and we can have a look. Okay. So for the next, I think if like that if only we guys are doing this, then from next time I'll just attach a meet link and I'll try to take this daily. Uh, Mostly. So if you guys are up for daily sessions, then just let me know. Okay, I'll just ask straight away. Like, how many guys can do this daily? I am up for it. Okay, just Krishna. Yeah, fine as well. Okay, 2 votes. Dhruv. Drew said +1 in the chat. And +1. So let's just do this daily then, 1 hour, and it will be pretty much covered faster. Acha, in terms of problem sets, एक जो चीज है, okay, the thing is the way we are covering the material, right? ये थोड़ा सा advanced है, मतलब थोड़ा सा theoretical side ज़्यादा है than application side. तो इसमें जो एक जो अच्छा मेरे को लेक्चर सीरीज मिला था वो ये था, और इसके प्रॉब्लम सेट्स थोड़े से ज़्यादा theoretical है, so I don't know if I should give this, but nevertheless I'll just post this link, you can have a look. इसके भी जो लेक्चर्स है काफ़ी अच्छे हैं. But I'm still trying to come up with problem sets which are very related. The other thing is like for the problem sets, ये जो MML वाली book है, right? The link is there. In that MML book का जो second chapter है, I think that covers all of these things that we're talking about. So I think in next few lectures we'll have covered the second chapter of it. Then you can cover, like you can look into the problem sets of those things. So